Assalamu alaikum everyone, this is Sabhat and here I am live. And you know what? A very happy Labour's Day to everyone who's celebrating this. And that's what I want to talk about, talking about something new other than usual. So let me just go on Facebook and check who's live with me over here. So I can just start with the session. Okay, so I can see myself on live on Facebook live, and I'm just going to wait for a few seconds. I'm already, I guess, 5 minutes late. Um, so I'll just, most probably there are many who are trying to celebrate Labour's Day, and then there are many who, despite of having a holiday, can't celebrate. So you know what? मैंने खुद बहुत कोशिश की कि भाई चलो आज लेबर डे की छुट्टी है इसी बहाने मैं भी जो हूँ छुट्टी कर लूँ but then it's not my style. So I just simply cannot take this day off in lieu of Labour's Day. So I decided to come live and let's talk about Labour's Day. और इसमें जो है like what I want to talk specifically is that I want to talk about how Labour Day is practiced in different countries other than Pakistan. So क्योंकि whenever we want to set an example, we always use the examples or we try to copy models. So um, that's why I decided that if we want to practice Labour's Day in the real sense in Pakistan, then we have to follow the examples of other countries. So that's what I want to talk about. That how is this Labour Day celebrated with regarding other countries in the true sense. So I'm just going to start. First of all, the number one thing is Alicia. Thank you so much for joining and watching. So the first thing is that as a person, as an individual, we need to recognize the dignity of work. Now, there is dignity in every kind of work, and it's just the mindset that needs to be different. Like, Labour's Day is an opportunity to recognize the dignity and value that different people do in different fields. Now, we can't say that if, like, अगर हम ये कहते हैं कि भाई ईंटें उठाने वाला, though he's a labor, but that we consider that's not a work. So ये जो एक कैटेगराइजेशन है कि काम को आपने जो है मीनियर लेवल में या डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दी है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस. यू हैव टू ट्रीट एवरी वर्क with great respect and dignity, no matter how small that is. क्योंकि जो जितना स्मॉल काम होगा उसमें भी तो जो है एनर्जी लग रही है ना, उसमें भी तो टाइम लग रहा है, उसमें भी तो जो है शिफ्ट्स हैं, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट है, चाहे इवनिंग शिफ्ट है, या चाहे 24 आवर्स की शिफ्ट है. One is putting a lot of effort in that. So firstly we need to recognize the dignity of work, and then whether it's manual labor, whether it's intellectual work, whether it's creative and endeavors, these are all kind of works, and as an individual we need to appreciate that. अगर हम जो है जर्मनी की एग्जांपल देखें तो अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन. अगर हम जर्मनी की एग्जांपल देखें तो लेबर डे पे वो क्या करते हैं, लेबर डे पे they take out rallies, then there are demonstrations to advocate for workers' right और and fair wages as well. और इसके अलावा जो है they highlight the importance of valuing every kind of work. So Germany, like these are the countries जहाँ पर जो है laborers are highly regarded, no matter whatever field they are from. So वहाँ पर जो है जर्मनी में जो है ना सिर्फ रैलीज होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं for fair wages के लिए जो है they are advocating, and then they have these kind of activities जहाँ पर highly regard किया जाता है. Now this is regarding that they are recognizing the dignity of work. They are not just focusing on themselves, या इस तरह नहीं है कि भाई like in different scenarios the organizations होती हैं, they're focusing on their funds or they're focusing on high value projects, या on different building projects के भी, how to
bring investors from foreign countries to your own country, ताकि जो है ये जो investors हैं या investment projects हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, rather than जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल है. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द हायर साइड, ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों को ड्यू इम्पोर्टेंस दी जाए. अब like if we consider it in the international scenario, I would talk about freelancing, the remote working setup. So people over here, yeah, people from Pakistan, बाहर के जो लोग हैं, why do they want to take freelancers from Pakistan? Now this is something which is it's a bitter reality, but the fact is that as Pakistanis, yeah, as Asians being from Pakistan, हम बहुत सस्ते हैं in our labor. So like $10 or $15 or even 50 or $100, it's not much for an American क्योंकि उनकी जो daily wages है that's much more than our base level. So यहाँ पर सस्ता बंदा मिल जाता है. But then again अपने भी मुल्क में you might be in this observation as well when you are into constructing या you are into any kind of project and you go out and search for labor. तो उसमें आप क्या करते हैं? You always go for the सस्ता one. Yeah, you always go for the one जो कि आपके बजट को मीट करता है. That is if you're not contracting any contractor or any of the sort and you're doing it all on your own, then you're going to go and talk to the labor जो कि आपके बजट को मीट करते हैं. And this is how projects go on over here. So internationally अगर जो है देखा जाए तो those people they are focusing on the labor and irrespective वो किस country से हैं. So they're focusing on their rights, they're focusing on their wages, they're focusing on equal opportunity of work over there. So this is regarding recognizing the dignity of work. अच्छा, अगर हम मज़ीद बात करें then it's जिस तरीके से मैंने बात की about dignity of work regarding fair compensation and living wages. Now this is also a very important aspect of labor work. और उसमें जो है क्या होता है like people, in fact we should before that let me just take the comment of Alisha. Okay, you are saying कि mashallah with great thinking about hard worker, labor, male and female, we need to appreciate these work. Not only this one day, we can always look and aftercare and taking care in our surrounding. Yes, Ali Shah, you are very much right. क्योंकि this is just one day and इस एक डे पे जो है you can't pay tribute to people who are working aimlessly and timelessly and they are putting in their heart and soul into your projects. So they are and you can just leave them behind and you just think कि भाई आज का जो दिन है सिर्फ इसलिए जो है इस एक दिन इनको जो ट्रिब्यूट पेश किया जाए. This is a tribute which you need to give them every day and each day of the week and every month. So throughout the year you have to give this tribute. So जिस तरीके से I just keep on telling you कि कोई भी डे हो, चाहे वो फादर्स डे हो, चाहे मदर्स डे हो, चाहे वो जो है सिस्टर्स डे हो, ब्रदर्स डे हो, these days should not be categorized to make the other person feel special. Rather ये ऐसी चीज़ें हैं which you should practice daily in your daily routines. आपके जो है जिस तरीके से जो अच्छी habits होती हैं they are part and parcel of your personality. In the same way जो ये days होती हैं बजाय कि इन days को ही जो है एक specific day बनाकर जो है tribute पेश किया जाए लोगों को, you should rather acknowledge them each day. So जहाँ पर fair compensation and wages का ताल्लुक है तो उसके लिए भी जो है वी शुड ऑलवेज इंश्योर कि भाई जो वर्कर्स हैं दे आर रिसीविंग दी फेयर वेजेस. इस तरीके से तो नहीं है कि आप जो उनसे काम करवा रहे हैं और वो काम जो है जो कि 2-3 या 3-4 या 4-5 लोग कर सकते हैं वो आपने एक ही बंदे के ऊपर जो है डाला हुआ है कि भाई उसने जो है ये काम करने हैं एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप उसका जो प्रोडक्टिव टाइम है वो भी अवेल कर रहे हैं, उसकी एनर्जी भी अवेल कर रहे हैं और फिर उसको जो है इन रिटर्न fair wage नहीं दे रहे बल्कि you are giving the wage which is quite less. So
But then again, जो wages हैं, you have to keep in mind the economic scenario या economic जो overall, if if you are an international scenario, or even international organization, or even if you are a local NGO, you have to keep this in mind कि according to the economic conditions क्या आपके जो wages हैं, are they sufficient for the labor or not, and then you have to be just regarding that कि जो भी आपकी वेजेस हैं, बट द वेजेस शुड बी सो गुड कि आप उनका जो प्रोडक्टिविटी है, वो जो यूटिलाइज कर रही हैं, जो टाइम उनका यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी यूज़ कर रही हैं, उसके अगेंस्ट उनको वेज मिली है, इट शुड बी वर्थ इट, इट शुडंट बी लेस देन द टाइम यू आर टेकिंग. सो अगर जो है इस लिहाज से, लाइक आई वुड गिव द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में जो लेबर डे होता है, इट्स द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द लेबर or labor movement, including the establishment of fair wages as well as their working conditions, or and this is all done through collective bargaining and legislative reforms. So this is how Australia ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें जो है इम्बेड की हुई हैं फॉर द लेबर. अच्छा, जहाँ तक जो है पाकिस्तान की एग्जांपल है, आई विल कम एट द एंड. I am not going to discuss it beforehand, for the simple reason कि I want to give you examples of countries जहाँ पर ये जो है it it is part and parcel of the constitution, and it has been practicing long for a longer time, not on this particular day. कि particular day पे तो definitely जो है everyone wants to show cause what they are going through, और क्या उनकी जो है struggles थी and everything, but yet they are also implementing everything in their day-to-day lives. um, okay, Alicia, I don't know what you're saying. I'll later check your comment. अच्छा, then जो है अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, तो अगेन लेबर डे, it serves us as a reminder of the importance of maintaining a healthy work life बैलेंस. क्यों क्यों ज़रूरी है? ताकि जो है इंडिविजुअल्स जो है दे हैव टाइम टू रेस्ट, दे हैव टाइम टू यानी अगर जो है वर्क लाइफ बैलेंस अगर लेबर डे उनके लिए है, तो देन ऑन दिस डे दे कैन रेस्ट, दे कैन स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज, दे कैन go out and make some kind of plans with them, and along with that they can pursue their responsibilities as well. अब ये जो चीज़ें हैं, इट्स नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर डे कि भाई ये पर्टिकुलर डे पे जो छुट्टी मिलती है तो लेबर्स अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बल्कि जो है इट्स ऑन रेगुलर बेसिस. और इसमें जो है यानी आप ये देखें कि अगर हम जो है फ्रांस की एग्जांपल लेते हैं, तो फ्रांस में इट्स नॉट जस्ट अ पब्लिक हॉलीडे, बल्कि जो है इट्स रादर अ डे फॉर रिलैक्सेशन एंड स्पेंडिंग टाइम विद फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, and they recognize the importance of personal and individual well-being as well. So उस दिन जब लेबर डे होता है, तो ये चीज़ें फ्रांस में इस तरीके से सेलिब्रेट की जाती हैं. और अदर देन दैट, अगर जो लेबर डे ना भी हो, तो स्टिल इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस the personal health and other things are equally respected, and it's these things are given priority in their work life as well. So there's a work life balance over there, work and personal balance in international scenarios and international organizations as well. Even जो international organizations पाकिस्तान में भी work कर रही हैं, उसमें भी ये scenario है. There's a hybrid situation, hybridly भी आप work कर सकते हैं. 3 days आप thoroughly जो है ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं, 2 days you can do it remotely, and then there's a hybrid system as well. जिस तरीके से जब कोविड आया था, तो मोस्टली तो जो है सारा जो सिचुएशन था, इट वाज शिफ्टेड टू होम बेस. अच्छा, देन इसमें जो है एक और अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, एक और जो चीज़ आ जाती है, इट इज़ अबाउट प्रमोटिंग वर्कर्स राइट एंड सेफ्टी. अब नाउ इसमें अगेन एक चीज़ है, वी नीड टू एडवोकेट फॉर दी protection and workers' right, and we have to ensure working conditions prevalent in the workforce, ताकि जो है एक्सीडेंट्स को जो है प्रिवेंट किया जा सके, या ओवरऑल वेलबींग जो लेबर्स की है उसको प्रमोट किया जा सके. अब इसमें जो है अगर आप देखें, लाइक इफ़ यू हैव स्टडीड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो लेबर डे है,
It is held on the first Monday in September. September में उनका होता है. And you know it's a time जबकि जो है when they remember about the struggles of the workers और किस तरीके से you know they were successful in securing their rights, such as the right of 8 hour work day and workplaces safe, जो उनकी सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उसके हवाले से. एंड देन किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया जा सकता है टू इम्प्रूव देयर राइट्स या कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री. सो ये वो चीज़ें हैं जो कि कनाडा में अप्लाई की जाती हैं और इनको ऑब्जर्व किया जाता है. दैट इज़ इन सेप्टेम्बर ऑन द फर्स्ट मंथ है. अच्छा, फिर जो है अगर जो है हम डाइवर्सिटी की बात करें या इंक्लूजन इन वर्क स्पेस की बात करें, तो इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल है ना दैट इज़ द यूएसए. और यूएसए में जो है किस तरीके से किया जाता है कि भाई ऑन लेबर डे इट्स अ डे ऑफ सॉलिडारिटी अमंग द वर्कर्स, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हैं, कोई भी उनका जो है ना प्रोफेशनल बैकग्राउंड है. सो द डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ओवर देयर. देन इट नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इमिग्रेंट्स, बल्कि जो है विमेन पे भी जो है रिफ्लेक्शन उनकी होती है द लेबर डे, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है इट्स फ्रॉम द इमिग्रेंट्स. विमेन होती हैं मार्जिनलाइज, जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी लेबर मूवमेंट का हिस्सा होती हैं. And you know they're treating everyone as a whole society, not just you know marginalizing them into different categories. So this is you know how they are supporting diversity and inclusion in workplace. Now this I'm talking about America. और अगर जो है हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट की, तो अगेन जिस तरीके से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इवन वर्कर्स नीड यू नो स्किल्स टू इम्प्रूव अपॉन देयर सेल्फ सो दे कैन बी मोर प्रोडक्टिव. अब अगर जो है यानी यहाँ पर हम जो है बहुत से लोगों को देखते हैं कि दो दे हैव एंटर्ड इनटू अ स्पेसिफिक फील्ड बट दे डू नॉट हैव यू नो एज पर जो स्किल्स हैं दे डोंट हैव दोज काइंड ऑफ स्किल्स. सो उसके लिए जो है द ऑर्गेनाइजेशंस और द स्टेट दे हैव टू इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन ताकि दे कैन बिकम एट पार. अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर पाकिस्तान में people have problems regarding spoken skills, regarding communication. Agar even if they are working in their field, they might have knowledge of that particular area, but they are not in that position to communicate. So these skills they have to be uh, taught to the skilled laborers so they can be very effective in communicating. Like in most organizations, चाहे वो local हैं चाहे वो international हैं, people or foreign delegates they are regularly visiting these organizations. और अगर इन organizations में जो काम कर रहे हैं if they are unable to communicate then it's not justified ना, and they can't grow in that sense. So grow up तभी करोगे जब when you are going to be in that position to learn side by side and upgrade your knowledge as well. So इसमें जो है अगर हम देखें, if we take the example of let me see सिंगापुर की अगर हम एग्जांपल लें, तो सिंगापुर में लेबर डे इट्स एन ओकेजन टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स, और किस तरीके से स्किल्स आप अपग्रेड कर सकते हैं, और इनिशिएटिव जो कि सपोर्ट करते हैं वर्कर्स को इन एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड इंगेजिंग इनटू कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट. सो सिंगापुर में ये चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं और इन चीज़ों को इनकरेज भी किया जाता है. नाउ अगर हम जो है ये प्रिंसिपल्स जो है एम्ब्रेस करें कि किस तरीके से आप लेबर्स को जो है अपलिफ्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ब्रिंग देम इनटू द मेन ग्लोबल मार्केट. सो ये प्रिंसिपल्स और ये जो लर्निंग्स हैं जो कि हम मैंने अभी आपको जो है डिफरेंट कंट्रीज से जो है कोट करके बताई कि उधर वहाँ किस तरीके से लेबर डे के हवाले से प्रैक्टिस किया जाता है, तो वी कैन ट्रूली ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वर्कर्स ऑन लेबर डे. और अगर जो है मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, तो मैंने जो है जितनी ऑर्गेनाइजेशंस में सो फार काम किया है या जितने सेक्टर्स में मैंने काम किया है, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, सॉरी टू से लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी भी लगेगी, बट
mostly things they are in paper. Yani, even if as an organization, even if you're an international organization and you're working with them, you in theory तो आपकी जो है उसमें मैनुअल में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, but when it comes to practice, you're not practicing it. Organizations are not practicing it. And yes, एक दिन जो भी डे होता है, चाहे वो मदर्स डे हो चाहे वो लेबर डे हो, आप उस दिन जो है you you portray as you are the advocate of such rights. और उसमें जो है लेबर्स को भी जो है आप एड्रेस कर रहे होंगे, आपको कोई लेबर अच्छा लग रहा होगा या वट एवर, आप उनको जो है पैकेजेस भी दे रहे होंगे कि भाई दिस इज़ हाउ वी आर सपोर्टिंग लेबर्स ऑन लेबर्स डे एंड वी आर डूइंग दिस एंड दिस, और आप उनको पैकेजेस देंगे, आप उनको कोई फेयर प्राइस वर्कशॉप पे कोई कार्ड बना कर दे देंगे, yeah, whatsoever. But these things don't go on in the long run. So for a day, everyone is a king and you treat them as kings and queens and prince and princess. But in regular days, ये चीज़ें जो है देखने में नहीं आती. So as far as Pakistan is concerned, अभी यहाँ पर जो है we need to learn a lot. We need to bring in good models, learn from the good countries, या जहाँ पर जो है ये रूल्स जो है बाकायदगी से अप्लाई किए जाते हैं और बाकी में जो है जो लेबर्स होते हैं ऑन लेबर्स डे दे डू फील लाइक किंग्स एंड क्वींस. बट फिलहाल तो यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. रादर देन दैट आज लेबर डे हुआ है, प्रॉबेबली इन द न्यूज़ वी माइट बी हेयरिंग so and so went there, so and so distributed this, and the laborers were treated like this, and there are like everyone is going and having spreading or giving speeches on Labour's Day. So this is what goes on like this in different organizations. But we need to practice and we need to make decisions जहाँ पर वाकई में ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं and it's seen in reality rather than just trying to show the world that we are so good and we practice these things. So this is what I wanted to share. And yes, another thing is Labor Day, जो कि initially जिन लोगों के लिए जो है ये डे रखा गया है, वो लोग practically they are the ones who are even working today. Like if I think about like earlier in the day, um, when I went outside, I could see the shops of the food carts and the ones who are the shopkeepers and those who are selling through small shops, like कोई जो है खाने की शॉप होगी या कोई जो है कॉर्न वगैरह की होगी या जिस तरह लेबर होती हैं who are sitting by the roadside. So those ones, they are not observing any kind of holiday, they are still working today. And so I don't think Labor Day is practiced in the true sense जिसके लिए ये Labor Day रखा है. So different countries, yes, they might be practicing this on the daily basis, but over here I don't see that. So this was what I wanted to discuss today regarding Labour's Day, and if any one of you have any questions, do let me know. And if anyone wants to come at the top of my screen and you want to share your ideas, you're more than welcome. And okay, so I can see Alicia. Okay, Alicia, you want to come online? You want to come on camera? Um and okay, I'll just bring you on camera. And in the meantime, जिनको जो है आज का टॉपिक क्लियर था और कोई क्वेरी नहीं थी, तो you can show it through your emoji so I know whether you like this topic or not. Okay, I can see your emojis coming on, so thanks for that. So I'm just going to add Alicia over here and let's see what he has to say. और अगर किसी ने रोने वाला इमोजी भेजा हुआ ना तो वो भी मुझे पता चल जाएगा. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये कोई रोने वाले इमोजी भेज रहा है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम अलीशा, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, जी बोलें. मैं
आवाज। हेलो। हेलो जी, मुझे आवाज आवाज आ रही है, आप क्लियर। बोलें। जी जी, मुझे आपकी आवाज जी जी क्लियर आ रही है। आप बोलें, बात करें। जी। सबसे पहले तो हैप्पी लेबर डे तमाम मजदूरों के लिए जो भी हार्ड वर्कर हैं, स्पेशली हार्ड वर्कर भी आते हैं, लेबर सकते हैं लोग एब्रॉड मुझे में या आपकी कंट्री आवाज का। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपकी आवाज में जो है थोड़ी दब वगैरह है। यहाँ बोले आप, मैं सुन रही हूँ। यहाँ का सिग्नल का इशू भी है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जी जी, आप हमारा ट्रैवल कर रहे थे, आपने visit। बताया था मुझे। जी जी। ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा सकता है। तो यहाँ भी हमने देखा है, मतलब लोगों को बाहर निकल के वैसे भी देखते आ रहे हैं, जो बेचारा वर्कर होता है, लेबर होता है, वो तो काम करता रहता है, इनका कुछ मतलब वो नहीं होता, इससे कंसर्न नहीं होता। वो लोग हॉलीडे एंजॉय करते हैं उन लोगों के नाम पे। ये अपने सेक्टर में भी देख सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट में भी देख सकते हैं, दूसरे सेक्टर में भी अब देख सकते हैं कि वो लोग उस हॉलीडे को एंजॉय करते हैं, जबकि ये हक इन लेबर का होता है, हार्ड वर्कर का होता है, मजदूरों का होता है, जो कि मतलब गर्मी सर्दी में जो है हमारे काम करते हैं। ठीक है, हमें कोई जरूरत पड़ती है, कोई भी काम होता है, तो हम सीधे जाके लेबर को ढूंढ के आते हैं, अपने काम करवाते हैं। तो इनको एहसास करना चाहिए। ठीक है, उनका काम है, लेकिन काम के ना हो उनको एहसास करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इंसानियत भी देखनी चाहिए, केयर करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। कभी हम देखें लोगों का मतलब ख्याल रखना हमारा फर्ज है, हमारा दीनी फरीज़ा भी है कि अब इंसान की वो किसी भी से हो, एज ए ह्यूमन बीइंग हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल तो ज़्यादा सही कहा बुरा नहीं आपने। बोल सकते, क्योंकि पर बात तो मेरी वॉइस से लग रहा अनफॉर्चुनेटली होगा, रियलिटी एग्जैक्टली ये वही नहीं है है ना। मेरी वॉइस से लग रहा होगा कि थोड़ा सा अभी भी तबीयत नासाज है, फ्लू फीवर की वजह से, इसलिए मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा मैसेज ये पहुंचाना था कि मतलब आप इतना बड़ा सदका जारी कर रही हो, थोड़ा सा हिस्सा हम भी डाल, ये सोच हम लोगों के अंदर भी आनी चाहिए कि हम लोगों की भलाई के लिए काम करें, आवाज बुलंद करें, और लोगों मुझे के जो अब मसले मुझे तो मसाइल आपकी हैं, प्रॉब्लम आपकी है। बात समझ ही नहीं आ रही अलीशा। मुझे बिल्कुल भी आपकी बात समझ नहीं आ रही। आधी बात मुझे समझ आई है, क्योंकि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा खराब है। सो आई डोंट नो, मे बी ऑडियंस को आवाज आ रही हो आपकी, पर मुझे क्लियर नहीं आ रही। टूटी हुई आवाज आ रही है। बट आपका जो मैसेज है वो मुझे समझ आ गया है, तो मैं आपका मैसेज ऑडियंस को दे देती हूँ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ओके, सो ऑडियंस, अलीशा जो है कह रहे थे कि भाई हमें जो है लोगों का एहसास करना चाहिए, खासतौर पे लेबर्स का। और सिर्फ जो है किसी एक खास दिन के लिए जो है मुकर्रर नहीं कर देना चाहिए। ये एहसास सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं आपको कहती हूँ कि चाहे आप जो मदर्स डे सेलिब्रेट करें या फादर्स डे करें, तो सिर्फ इस एक दिन के लिए जो है आप जो जिसके लिए सेलिब्रेट करें उनको खास ट्रीट करें। बट रादर आपको जो है हर दिन जो है उन्हें खास ट्रीट करना चाहिए। और लेबर्स को तो खास तौर पे आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि भाई अगर वो काम ना करें तो आपके काम नहीं चलेंगे। तो यू नीड टू प्रमोट देम, यू नीड टू respect them, and you need to grace their work and grace them as well, क्योंकि there is dignity in every kind of work. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। every work is important and every work matters and every person matters. तो जब आप जो है लोगों को जो है रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी।
that is my message for today on Labor's Day as well. Or this is all I wanted to share. And now, if there's anyone else who wants to come online and on camera, do let me know. Jan Mohammed, Walaikum Assalam. And Bushra, thank you so much for joining and watching. And Abdul Razak, thank you so much for joining and watching as well. Okay. So now, if there's not anyone who wants to come on camera, I can bid you, bye bye. And inshallah, आप लोगों से जो है tomorrow is Friday. So inshallah, कल आपसे जो है 8 बजे मुलाकात होगी in my live session. And till then, I won't be doing a vlog in the morning. I have a schedule to follow. There's uh, something I have to attend to in the morning, so I won't be doing the vlog. But definitely, I'll post something for you so you can, you know, you can enjoy it throughout the day. And in the evening, inshallah, I'll come live. And Abdul Razak, you want to come live? You're at the top of my screen. I'm just going to, try to bring you live on camera. If you want to come and join the session live, you can, come live. Okay, you have declined. No issues. So, inshallah, see you tomorrow at 8 p.m. in this session. Till then, bye bye and take care. Allah Hafiz. Abdul Razak, I'm fine. Alhamdulillah. I hope you're fine too. Alhamdulillah. Bye bye.